right, on to now news coming in from the national capital, where the tussle over the AAP government's door-to-doorstep ration scheme continues. Now, the BJP leaders have approached the Lieutenant Governor now to request him to try and stop the implementation. The BJP claims that Delhi government cannot distribute ration at doorsteps, as it is the central government's plan to distribute ration at fair price shop. Now, this comes after Delhi government approved the removal of the name Mukhyamantri Ghar Ghar Ration Yojana from its doorstep delivery of ration scheme due to objection by the centre. क्या दिक्कत है अभी भी, क्योंकि उन्होंने तो प्रधान जो मुख्यमंत्री करके जो उन्होंने एक नाम डाल दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो आप राशन देते हैं, लेकिन अब क्या दिक्कत है? अब आप लोग क्यों इसके ऊपर विरोध करना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के नेताओं की ओर से ये कहा गया कि ये योजना उनके द्वारा चलाई जा रही है। झूठ बोला गया। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह राशन दिया जाता है। ठीक है। आप इस योजना का नाम बदल ही नहीं सकते हैं। ठीक है। आपने बदलकर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कार्य किया है। अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये योजना उनको दिल्ली में चलानी है और अपने नाम से चलानी है, तो वो ओपन मार्केट से या एफसीआई से गेहूं चावल खरीदे और लोगों को अपनी ओर से, जैसे मोदी जी दे रहे हैं, अपने तरह से वो बांट सकते हैं और इस योजना का नाम अपने नाम पे रख सकते हैं। हमको क्या तकलीफ हो सकती है, लेकिन किसी कीमत पर ना योजना का नाम बदला जा सकता है और केवल राशन जो है ये फेयर प्राइस शॉप से ही बांटा जा सकता है। Meanwhile, AAP leader Saurabh Bharadwaj has hit back at the BJP for trying to block the Delhi government scheme. AAP leader said that if the centre is still objecting to the scheme after the removal of the name, then it means that they are conspiring with the Russian mafia. Listen in. Aam Aadmi Party's chief spokesperson Saurabh Bharadwaj is with us. Sir, the way that BJP is again trying, and every time they are trying to stop this ration scheme to be rolled out, what will you say? Today they have met the Lieutenant Governor. In fact, yesterday the Delhi cabinet had approved, and in fact they have now removed the name of the CM on the scheme. So what will you say about that? The central government raised an objection that you cannot push the scheme in the name of the Chief Minister. Yeah. Although it was frivolous, but we have agreed to it, and now we have removed all the names from the scheme. And now if the central government still has an objection, that means they are standing firm with the Russian mafia, and I'm sure they are getting money from the Russian mafia, and that's why they want to stall the scheme in Delhi. Okay. So, are you going to the court if they again try to stop it? Look, the country and the states cannot run via courts. Okay. So what will you do? Courts are overcrowded already with a lot of cases. I think the biggest court for us is the court of people. Okay. And I think people are watching all this, and they will punish BJP at appropriate time.